everyone. Welcome back on LegalEdge After College YouTube channel. So today we will be discussing Contract Act multiple choice questions. Now these questions are not only important for upcoming LLM entrance examination, however they are important for all the examination where Contract Act as a subject is to be asked. For example, judiciary, for example, UGC NET, AIBE, or it could be LLM entrance examination, right? So, just tell me once in the chat box that am I properly audible, visible, and then we will start solving the questions. All right. Any issue with the visibility or with sounds? I hope no. So let's start. And this is the first question of the day. It says that a contract of life insurance, the performance of which depends upon a future event, falls under the category of, is it a contingent contract, is it a contract of indemnity, is it a contract of guarantee, or a special contract? All right, Pukhraj, thank you so much. So, Pukhraj, let me know that everything is fit and fine when it comes to voice and the camera. So, now answer. What is the answer of question number one? Here they are asking about लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? ओके, पुखराज बिश्नोई फर्स्ट का बी होगा, जोश लीगल नॉलेज बी होगा. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके, सो हियर आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, राइट? Anyone, can you please explain me why it is indemnity? Why you people are answering that it is a contract of indemnity? Am I talking about only insurance, or am I talking about life insurance? Here this word life is very important. 124, पुखराज 124 क्या कहता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या वो लाइफ इंश्योरेंस की बात करता है या जस्ट इंश्योरेंस की बात करता है? एनीवन? देखो, when it is life insurance, right? लाइफ इंश्योरेंस एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे कंटिजेंसी है, राइट? कंटिजेंसी क्या है? डेथ है. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए, right? And I knew it that you people will get confused in such kind of questions, and that's the reason I like picked this particular question. Here people are saying that I think option A, that Anushka, Pukhraj, which will happen or not happen? Sanket A. Yes, now you are on the right track. The answer here is A. Why A? Because here it is a contract or contingent contract. Now tell me what is contingent contract and where it is defined in the Indian Contract Act. Anyone? Where contingent contract is defined or which section relates with contingent contract? Pukhraj, you're right with section, but have you got the concept here? Because earlier you answered in like you have given wrong answer. All right. So absolutely right. When it comes to contingent contract, it is section number 31 of Indian Contract Act. All right. जहां पे कंटिजेंसी होती है किसी काम के होने की या नहीं होने की, उस पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है. So here Amit Anand is asking, ma'am, expected date of DULLM entrance examination. I know कि मैं कोई भी लाइव दूं इस सवाल के बिना तो नहीं कंप्लीट होता है. नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, राइट? सो रादर ऑन फोकसिंग की कब नोटिफिकेशन आएगा, डेट आएगी, यू शुड फोकस ऑन अभी जो करंट क्या आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आई बिलीव. ओके, नाउ so here the answer is contingent contract. Why? Because here it is not talking about insurance, rather it is talking about life insurance. All right. Chalo, next question. Next question here is, in which of the following circumstances a party to a contract will be discharged from performing the contract? When a party to a contract will be discharged from performing the contract, when that will happen? Out of these four options, what is going to be the correct answer? Is it when the performance of the contract becomes onerous, or is it when the performance of a contract becomes impossible,
or when the performance of a contract becomes commercially inviable, or when the performance of a contract becomes expensive. Now, read the question properly. I don't want even a single wrong answer. All right. What is the answer of question number second? It is talking about circumstances when a party to a contract discharged from performing the contract. कब party to contract discharge हो जाती है contract को perform करने से? Okay, Faraz, it's B. Bilal Khan B. Pukhraj, second का B होगा. Okay, all right. You all are giving the correct answer. Now, any one of you can tell me which section relates to it. Which section relates to this particular point when the contract becomes impossible? Anyone? Section? Okay. B, B, B. Hi, Urja Rastogi. How are you? All right. Your answer is correct. But Pukhraj, what is the section? Which section attracts this? This particular question is from section number 56. I hope ये सबको पता होगा. 56 का para 2. Right? Why you people? How come 37? How come 37? Anyone can explain me why 37? It should be 56. An agreement to do an act impossible in itself is void. Yes, frustration of contract. Charu, you're right. So next question. Next question here is, which of the following cases is related to doctrine of frustration? कौन सा केस यहाँ पे doctrine of frustration से relate करता है? All three cases are important in their respective like concept. However, here they're talking about doctrine of frustration which is provided under section 56. कौन सा केस से relate करता है? Is it Hartley versus Baxendale? Is it Carler versus Carbolic Small Ball Company? or is it Satrabrत Ghosh versus Mungniram? Now, अगर तुम्हें आंसर आता है तो try to figure out कि बाकी जो दो केसेस हैं वो किससे relate करते हैं. Like write that answer in the chat box. Doctrine of frustration. All right. पुखराज, आप शायद बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो इसलिए आप लाइक गलती कर देते हो. सो improve this habit of yours and try to take your good time before answering the question. 3 का क्या होगा? थर्ड का? Aarti is saying A. Bilal is saying A. How come third का A? Urja, you're right. Pukhraj, you're right. It is C. It is Satyabrata Ghosh versus Mugni Ram. All right. Can anyone? Okay. So Pukhraj is saying कि Hartley versus Baxendale is related to section number 73. That's where he is absolutely right because it relates with damages. Okay. Damages. And Carler versus Carbolic Ball Company, which is very important case of Indian Contract Act, relates with, it relates generally with general offer. All right. Yes, Pukhraj, you're right. Now, anyone can tell me what happened in Satyavrat Ghosh versus Mungni Ram? क्या हुआ था इस particular case law में? Anyone? किताब खोल के पढ़ लेना एक बार, ठीक है? And you will find this particular case in your Bearect as well. जो comments लिखे होते हैं Bearect में, वहां पे भी ये case तुम्हें section number 56 के नीचे मिल जाएगा. Now, which of the following section of Indian Contract Act embodies the rule of Clayton's case related to appropriation of payment? Now tell me, Clayton's case कहाँ provided है या हम किस section को Clayton's case कहते हैं? Question number 4. आंसर करो जल्दी से.
Anyone? Sanket Chandel, you're right. Can you please elaborate what actually this rule means? Urja, you're wrong. It's not 59. It's 61. So the answer will be B. No, Pukhraj, it's not 60. देखो ये जो चैप्टर है ना अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, there's a chapter. If I'm not wrong, that chapter extends from 59 to 61. Now, what happens in this? What is the meaning of this concept appropriation of payment? अब यहाँ पे होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से पैसे उधार ले रखे थे, ठीक है, ए ने बी से पैसे उधार ले रखे थे, अब ए को बी के पैसे देने हैं। अब जब वो ये पैसे देगा, राइट, जब ये पैसे देगा तो उस पैसे की जब जो देना है उसको बोलेंगे अप्रोप्रिएट होना, किसका, पेमेंट का। सो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट व्हेन ए इज गोइंग टू रिटर्न मनी जो उसने उधार लिया था, राइट। अब ये जो जब रिटर्न करेगा तो किस सीक्वेंस में रिटर्न होगा, या यहाँ पे किसकी अथॉरिटी रहेगी कि वो डिसाइड करे कि ये जो रिटर्न किया जा रहा है ये इस सीक्वेंस में किया जा रहा है। इज इट बीज अथॉरिटी और इज इट एज अथॉरिटी? बिकॉज बी को पैसा देना है तो इट इज गोइंग टू बी बीज अथॉरिटी, राइट। बहुत ही ल्यूसिड मैनर में मैंने आपको समझाया। आफ्टर दैट व्हेन यू विल open your ballot and will read these cluster of sections, then it will be very easy for you to understand. All right. Yeah, Sanket, you can say that. Debt return karna, that's Clayton's rules, which is very important. So here answer is B, that is section number 61. Now, next question is restoration of benefits received under a void contract is possible under Indian Contract Act. In which section is it? 62, 63, 64, 65? Restoration of benefits received under void contract. What is the answer here? Question number 5. Urja is saying कि the correct answer of 4 is A. Now, ये ना तुम्हें काफी डिफरेंट लाइक बिकॉज ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये काफी जुडिशरी में पूछा जा चुका है। किसी किसी बुक में या किसी किसी स्टेट जुडिशरी ने आंसर में इसका 59 भी दे रखा है, राइट। कहीं कहीं 61 भी दे रखा है। हाउएवर मोस्टली 61 इज द आंसर। लेकिन अगर तुम्हारा जो ऑप्शंस हैं उसमें 59 61 तक का एक बार है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए है वो 59 से 61 तक होता तो आंसर होता ए इन दैट केस, बिकॉज ओनली सेक्शन 59 डज नॉट लाइक fulfills all the criteria of Clayton's rule. All right. All right. So इसको like जो most appropriate है वो तुम्हें मार्क करना है। तो इसमें कंफ्यूजन होगा बिकॉज डिफरेंट जुडिशरी ने अपने जो आंसर्स वो पब्लिश करते हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर व्हाट is the correct answer here. Restoration of benefits received under a void contract. All right. Answer question number 5. 12 people are online, but I've got only 9 likes. Are you not liking the session? If you are liking it, do like it. Question number 5 का जल्दी से आंसर दो. Come on. Pukhraj is saying कि 5th का D होगा. Others, all are agreeing with Pukhraj and Bilal? Yes, absolutely right. Here the answer is section number 65. एग्जाम्पल से समझ लो, यहाँ पे ए बी से प्रॉमिस करता है कि if when you're going to get married to my daughter,
the name of the daughter is C, whose daughter? A's daughter, then I'm going to pay you rupees 1000. But जिस दिन प्रॉमिस हो रहा है उस दिन ए की डेथ हो जाती है, इन दैट केस इट कम अंडर सेक्शन नंबर 65। तो उसको जो ए जो है, जो इन्होंने 1000 रुपीज बी को दिए थे, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ बी टू रिटर्न दोस 1000 रुपीज टू ए। समझ आया? वेरी इजी एग्जाम्पल, इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। समझ नहीं आया है तो बता दो, कोई भी, एनीवन, इट्स वेरी इजी। आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर मी टू रिपीट द एग्जाम्पल वंस अगेन। All right, let's move forward and see question number 6. Now, here question number 6 says X sends a registered insured parcel. X sends a registered insured parcel by post to Y. ठीक है? X Y को एक registered insured parcel भेज रहा है, but post office does not deliver the parcel to Y. अब जो post office है उसने Y को deliver किया ही नहीं. In the suit instituted by Y against the post office, it is agreed that Y is not the party. अब यहाँ पे जब सूट फाइल किया, ठीक है, किसने सूट इंस्टीट्यूट किया? Y ने किया। और किसके अगेंस्ट किया? पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट किया। ठीक है, इट इज अग्रीड दैट Y is not a party to a contract। तो ये अग्री किया क्या कि जो ये भाई साहब हैं, he is not the party to the contract between X and post office. Between whom? X and post office. All right, Y cannot bring a suit to enforce the contract. Which one of the following is correct answer to this case? क्या आंसर सही होगा? Y is not entitled to file the suit। क्या Y entitled नहीं है सूट फाइल करने के लिए? Y can only file a suit on behalf of X। Y कर तो सकते हैं सूट फाइल, लेकिन X के behalf पे ही कर सकते हैं। Option C says Y can file the suit as a constructive trust has been created in his favor। Option D says only X is entitled to file the suit। अब now tell me what is the answer here? Question number 6। Question पूरा समझा दिया है। Now it's your, like, now you have to answer। Raj, you're saying कि C होगा, but you're not sure about it. Pooja is again saying C. Anyone else? Josh, Bilal. Amit is also saying C. And what is the reasoning behind it? Why are you people saying C? Is there any doctrine behind it or related to it? कोई doctrine याद आ रहा है इसको पढ़ने के बाद? So here this whole situation is related with doctrine of privity, right? पढ़ा होगा ये अपने लॉ स्कूल्स में। आंसर इज करेक्ट, आंसर इज सी ओनली, कि जो वाई है वो फाइल करेगा सूट एज कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, क्योंकि उसके फेवर में कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएट की गई है। ठीक है, so the answer here is C only. It is related with doctrine of privity. Now, next is the following rules as to consideration is true. Consideration के केस में कौन सा रूल सही है? Is it that consideration must be adequate? Is it consideration must move at the desire of the promiser? Is it consideration must be present or future? Or is it consideration must move at the desire of the promisee? What is the correct answer here? Sanket, why you deleted your answer? 7. Consideration is true when? क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना कंपल्सरी होता है?
Read the question properly. Is it important कि consideration adequate हो? Is it necessary that consideration should be adequate? How come, Pukhraj? Can you please explain me how adequate होना compulsory होता है? Haven't you people read section number 25 का explanation too? How come A? No one has given the correct answer yet. No one. See, पहले एक एक ऑप्शन को लेके चलो. Just answer me. Pukhraj, answer me. Is it important or is it necessary कि consideration जो है वो adequate हो? सिर्फ इस बात का आंसर दो. It is not necessary, right? Section 25 का explanation 2 यही तो बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि consideration adequate हो, right? तो ये हट जाएगा. All right. अब सेकंड पे आओ. Must move at the desire of promisor. क्या consideration किसी और के desire से भी move कर सकता है? एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेरेक खोलो, सेक्शन 2 में जाओ and read it once. Now let's move forward and see. It must be present or future. क्या future consideration हो सकता है? Yes, Sanket, you're right. It is not required to be adequate. ठीक है? It must be absolute. It is needed to be absolute. Consideration absolute होना चाहिए, ठीक है, और unqualified होना चाहिए. वो कहाँ है? That is provided under section number 7 of Indian Contract Act. Now, what I want from you people is to answer this, research about it, proper paragraph form करके इसको comment box में लिखना. I'm not going to tell the answer here. What is the correct answer? Because now few of you actually has given the correct answer, but I do not know you people know the reasoning about it or not. So what you are going to do, you are going to pick each and every option and will research that ये option सही है या नहीं. Then you will go and reach to the answer. Then tell me that what should be the correct answer here. Because if I'm going to tell you, then you're not going to research. All right? Here, ये मैंने हटा दिया. Now it is between 3. मैं बता देती हूँ पढ़ना क्या क्या है. सेक्शन 2 पढ़ना है इसके लिए तुम्हें, ठीक है. मोस्टली चीजें तुम्हें सेक्शन 2 में ही मिल जाएंगी. All right? Bilal, if you think that B is the correct answer, then also write the reasoning. All right? You have to write the reasoning. Now, next is, as per the mirror image rule, अब contract act में mirror image rule भी आता है, ठीक है? The offer and the counter offer must match each other. The acceptance should be unconditional and thus should correspond to the offer. The acceptance of the offer should be conditional. None of the above. What is the correct answer here of question number 8? क्या होता है mirror image rule? Question number 8. Absolutely right. It is B. The acceptance should be unconditional and thus should correspond to the offer. That is mirror image rule. All right. Now, next is P, a wholesale dealer in sugar, agrees with Q that he would not sell sugar beyond a radius of 1 mile of his go down. अब ऐसा जो अग्रीमेंट मैं समझाती हूँ हो क्या रहा है. P जो है ये होलसेल डीलर है शुगर के. ऑल राइट. नाउ ये अग्री करते हैं क्यू के साथ कि ये जो P है ये जो 1 माइल का रेडियस है गोडाउन के आसपास वहां पे चीनी का व्यापार नहीं करेंगे. He is not going to sell sugar. Now, this type of agreement is valid or it is invalid, or this agreement being in restraint of trade is void, or the agreement is voidable at the option of P.
राइट नाउ आंसर यहाँ पे क्या आंसर होगा एंड प्लीज राइट योर आंसर विद रीजनिंग एंड द सेक्शन ऑल राइट व्हाट इज द आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 9 हाउ कम ए भारती हाउ कम ए डू यू नो द सेक्शन it attracts C. Okay, all right, Sanket. If you think C is the correct answer, could you please write the section it relates with? Come on. बहुत बार क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ये सेक्शंस तो सीरीज से याद करवाए थे उन लोगों को Okay, let me give you some hint. It is in 20s. Sanket, your answer is right. Not 28, Sanket. It is 27. It's 27. All right. Answer is C. Reasoning is section number 27, which says agreement in restraint of trade is void. Agreement in restraint of trade is void. Yes, Bilal. Yes, Bharti. Now next. Which of the following is are involved in a wagering agreement? क्या involve होता है wagering agreement में? An uncertain event, parties have no control over the event except the stake parties have no other interest in the event. Options are only 1 and 2, 2 and 3 and 1, 2, 3. क्या आंसर होगा यहाँ पे? Question number 10. And if you know the answer, kindly try to find out this section. Open your bare egg and find out the section. Raj is saying option C right as per section 27. Absolutely right. Now we are discussing question number 10. So question number 10 का क्या आंसर होगा? B. People are saying the answer should be B. You are wrong. How come B? Read the third option once again. Except the stake parties have no other interest in the event. Here the answer is D. All three statements. All right. Next, A agrees to let her daughter hire B for concubinage. The agreement is. अब now you must be thinking कि इसका meaning क्या होता है. तो concubinage basically is prostitution only. All right. Where two adults enter into sexual practices and without like a partner consent or you can call it like it is also be called like prostitution or sex trade. All right. Now A agrees to let her daughter hire B. A agree करता है कि भाई उसकी daughter है D. वो D daughter है वो B hire कर सकता है किसके लिए? First like कुछ तो भी immoral act के लिए. वहां पे जो act है वो कैसा होगा? The agreement is agreement valid होगा, agreement moral होगा, agreement void because it is immoral होगा या if the daughter is major then the agreement is valid. What is the answer of question number 11? Absolutely right, Pukhraj. It is C. ठीक है because it is immoral कहाँ आता है सेक्शन नंबर 23 में आता है ठीक है 23 क्या कहता है how come 26 Bharti it is we are not talking about marriage we are talking about concubinage right now it's C absolutely right section number 23 कहता है what consideration is lawful, what objects are lawful, and what are unlawful. All right.
Now, next question. Which of the following cases is related to doctrine of frustration? ये सबको पता होगा और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये भी पता होगा. Question number 12. Question number 12. What is the correct answer here? 12 cars saying C. All right. Is it C? Absolutely right. Here we're talking about famous case of doctrine of frustration. It is Rill versus Henry. Hartley versus Baxendale relates with what? It relates with damages. All right. Okay. Who is saying D? Sarvoj Satta. No, it's not D. The answer here is C. Charu, you're right. Bilal, you're right. Next question is damages allowed under section 73 of Indian Contract Act are जो section 73 में damages allow होते हैं अब section 73 जो है it is the part of chapter number 6 right ये जो है ये part है किसका chapter number 6 of Indian Contract Act now इसमें कौन कौन से section आते हैं 73 आता है 74 आता है और 75 आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो डैमेजेस अलाउ होते हैं सेक्शन 73 में वो कैसे होते हैं क्या वो लिक्विडेटेड होते हैं क्या वो कॉम्पनसेटरी नेचर के होते हैं क्या वो पीनल नेचर के होते हैं या नन ऑफ द अबव क्या आंसर होगा यहाँ पे ये कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं ऑल राइट यस संकेत कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं ठीक है अब कैसे डैमेजेस अलाउ किए जाते हैं तो क्या रिमोट जो डैमेजेस होते हैं उनको अलाउ किया जाता है नो रिमोट डैमेजेस को अलाउ नहीं किया जाता है इनडायरेक्ट डैमेजेस को अलाउ नहीं किया जाता है जब ये पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट ऑल दीज थ्री सेक्शंस सेज अबाउट इट now, which of the following is not relevant in determining the quantum of damages under Section 73 of Indian Contract Act? अब आपको सेक्शन 73 में क्वांटम ऑफ डैमेज निकालना है कि कितना डैमेज मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पे जो रेलेवेंट नहीं होगी इज इट मोटिव इज इट मैनर इज इट लॉस सफर्ड और इज इट बोथ ए एंड बी व्हाट इज द आंसर हियर Question number 14. What is not relevant in determining the quantum of damages under section 73? Okay, Charu is saying D, both A and B. Motive के बारे में थोड़ा सा सोचो, motive रहेगा या नहीं? So, I will ask you कि भाई इस क्लास के बाद चैप्टर नंबर 6 को तो एक बार अच्छे से पढ़ ही लेना ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है आरती is also saying D. Amit is also saying D. So you're saying that only loss suffered is quantum of damages. Okay. अगेन एक और क्वेश्चन दिया था ये वाले क्वेश्चन को भी पढ़ के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और रीजनिंग भी लिखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द रीजनिंग you are going to write section number 73 74 and 75 as well now right now I think 12 13 people are live and I want 13 comments इसको एक बार ही पढ़ के समझ के यहीं पे इसका आंसर लिख देना I'm not going to tell you the answer okay so whosoever is going to watch this video later for answer you can check out the comment box all right now where the rate of interest prescribed
in case of breach is too high, rate of interest बहुत high है, the court can interfere on the proof of coercion, on the proof of undue influence, on the satisfaction that the stipulation is by the way of penalty or on the ground of equity. क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? टेल मी. किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट की बात हो रही है. अगेन ये जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन फ्रॉम chapter number 6 of Indian Contract Act, which deals with compensation, damages and penalty. और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो कोर्ट कब इंटरफेयर कर सकता है? Bilal, you're wrong. Here the answer is not D. No. For this particularly you have to study सेक्शन नंबर 74. सेक्शन नंबर 74 पढ़ोगे तो ये समझ आएगा. तो यहां पे जब आप सेक्शन नंबर 74 पढ़ोगे तो ये पूरी लाइन ही दिखेगी. सेटिस्फेक्शन दैट स्टिपुलेट इज बाय द वे ऑफ पेनाल्टी, राइट? सो आंसर हियर इज सी, where the rate of interest prescribed in the case of breach is too high. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो क्या उसको कोएर्शन कह सकते हैं? अगर तुम कोएर्शन को पढ़ोगे, कोएर्शन कहाँ डिफाइन है? हमने एक फॉर्मूला सीखा था, 13 में कंसेंट था, 14 में फ्री कंसेंट था, उसके बाद CUFMM था, राइट? तो C था कोएर्शन, मतलब कहाँ है? 15. सेक्शन नंबर 15 में कोएर्शन है, राइट, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन के केस में वॉइडेबल हो जाता है, राइट? फिर ऑन द प्रूफ ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ है? सेक्शन नंबर 16, वो भी नहीं होगा. इक्विटी का तो कोई ग्राउंड यहाँ पे बनता नहीं है, बचा सी, तो आप ऑड वन आउट भी कर सकते थे. हाउएवर व्हेन यू आर गोइंग टू रीड सेक्शन नंबर 74 यू विल गेट टू नो दैट वहां पे ये बात साफ लिखी हुई है, ठीक है, कि द सैटिस्फैक्शन दैट स्टिपुलेट्स बाय द वे ऑफ पेनाल्टी. ऑलराइट, हाउ कम डी? चलो नेक्स्ट. Quasi contractual obligations are based on theory propounded by whom? तो quasi contractual relationships जो होते हैं, जो extend कहां से कहां तक करते हैं, कोई बताएगा? Which section quasi contractual relationship starts and where it ends? Now, वो जो थ्योरी है किसने propound की है? Is it propounded by Lord Wright, Lord Sumner, Anson और Lord Mansfield? ये रटने वाला सवाल है, रट लेना इसको, कहीं लिख के रखना और रट लेना. आंसर हियर इज लॉर्ड मैंसफील्ड. ऑलराइट, नाउ एक्स प्रोमिसेस टू मेक अ स्कल्पचर फॉर वाई. एक्स जो है उसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं स्कल्पचर बनाऊंगा वाई के लिए. ऑलराइट, नाउ एक्स सन कैन परफॉर्म द प्रॉमिस. क्या इस प्रॉमिस को एक्स का बेटा परफॉर्म कर सकता है? X has to perform the promise personally. क्या ऐसे प्रॉमिस को X को ही पर्सनली परफॉर्म करना होगा? क्या X का जो सर्वेंट है वो परफॉर्म कर सकता है? क्या X का एजेंट परफॉर्म कर सकता है? तो यहाँ पे मोस्टली ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर, बिकॉज आंसर वेरी is very apparent. However, can you please tell me the section it attracts? किसी ने इसका सेक्शन पढ़ा है कभी? ये कौन सा सेक्शन ये बात कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? पीयूष शर्मा, यस, आंसर बी इज करेक्ट. Which section deals with the same? Okay, it is dealt in section number 40, which talks about person by which a promise is to be performed. इसको याद रखना. हो सकता है तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट सेक्शन नंबर 40 से कुछ घुमा फिरा के सवाल बना दिया जाए. ऑल राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ गारंटी व्हिच इज इंटेंडेड टू कवर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड? अब कोई एक गारंटी है जिसका इंटेंशन है कि वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को कवर कर लेगी ओवर अ पीरियड. तो अब ये तो नाम से समझ आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आंसर क्या होगा? कंटिन्यूइंग गारंटी, राइट? अब कोई बता सकता है वेयर इट इज डिफाइंड? विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कंटिन्यूइंग गारंटी?
सेक्शन। Absolutely right, Bilal. 129, section number 129 of Indian Contract Act deals with continuing guarantee. 126 में definitions हैं. कोई बता सकता है 130 क्या कहता है? 130 एक बार देख लेना. That's again an important section. Now next is qui facet per alium facet per se. ठीक है? Qui facet per alium facet per se means he who acts through another acts himself. He who has not the power of alienating is under the necessity of retaining. He who does not prohibits when he is able to prohibit is in fault. Who is silent is taken to consent. क्या आंसर होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19. इंपॉर्टेंट इट इज. और ये कहाँ यूज होता है? अगर किसी को ये पता है कि इसका आंसर क्या है, तो क्या कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो कि डिफाइन है बिटवीन टू पर्सन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर दिस मैक्सिम इज टू बी यूज्ड, और विच व्हाट इज द डॉक्ट्रिन विच इट अट्रैक्ट्स? Absolutely right, Urja. So, in previous section, I have asked what section number 130 deals with. So, Urja is answering it deals with revocation of continuing guarantee. And you have to like remember this that 129 guarantee की बात करता है और 1 जो 30 है deals with revocation of continuing guarantee. All right. Now, next is this question, qui facet per alium facet per se. I'm saying that if you know the answer, okay, all right, Bilal. Bilal is giving the correct answer. That answer is A, that he who acts through another act himself, and it is used in relationship of agent and principal, which is called agency, right? Agency में ये use होता है. और कौन सा लाइक डॉक्ट्रिन है? तो वाइकेरियस लायबिलिटी. ठीक है? वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि अब प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द लाइक सर्वेंट. अ प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट. वहां पे ये यूज होता है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर. अनदर का मतलब यहाँ क्या हुआ? वाइकेरियस में एजेंट एक्ट हिमसेल्फ, तो माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल ही एक्ट कर रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट. To convert a proposal into a promise. अब proposal को promise में convert करने के लिए जो acceptance है वो कैसी होनी चाहिए? The acceptance must be absolute and unqualified. The acceptance must be absolute and unqualified, unusual and reasonable, usual and qualified. क्या आंसर होगा? Yes, संकेत. Vicarious liability. क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? Bilal is saying A. Now there's a like trivia here in this particular section. The answer is A or B because यहाँ पे सिर्फ qualifies और qualified का डिफरेंस है. एक में लिखा है qualified, qualifies. किसी के पास डायरेक्ट है तो एक बार सेक्शन नंबर 7 पढ़ के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि what term is used there. It is absolute or unqualified or absolute and unqualifies. क्या है वहां पे? Urja, do you have your direct with you right now? Yes, Bilal, now you're giving the correct answer. Do you have your anyone? Do you have your direct with you? You're saying qualified. All right, just check कि वहां पे terminology क्या use हुई है. Right? In my opinion, the answer should be
Absolute and unqualified. However, you have to check that once. All right. All right. Okay. So that brings us to the end of this session. However, there are multiple things we are doing when it comes to LLM entrance examination. We are coming up with a crash course, the announcement of which we are going to make very soon. सो लीगल एज आफ्टर कॉलेज के जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है ना उन पे एकदम लाइक रेगुलर रहा करो जिसे तुम अपने फ्रेंड्स का इंस्टा स्क्रॉल करते हो मेक इट अ हैबिट कि दिन में एक बार तुम्हें इंस्टाग्राम लीगल एज आफ्टर कॉलेज का भी स्क्रॉल करना है यू हैव टू चेक द कम्युनिटी ओवर देयर because you are going to get a lot of important information which are important for your upcoming entrance examination, be it LLM, be it AIB, UGC NET, or if in case you're preparing for judiciary examination. All right. Okay. Any question you want to ask from me? Any question? You like the session? And one more thing I want to ask you people that you people want me to bring a session where I'm taking a like full session from one subject. For example, I'm taking 20 questions from one subject, or you want me to mix up the sessions, like questions and make a session. So what do you want? You want to get question mixed from different subjects, or you want me to come up with single subject at a time? Okay, so Bilal is asking, ma'am, is mock still available for you? Yes, you can buy from the website. Okay, thank you, Pukraj. All right. I think you people do not want to ask any question. If you have any other question, you can put that question in the comment box and we will try to reach to you. Okay, sure, sure. Like people are demanding case law ka session here. I'll try to come up with the case law ka session very soon. Okay. So thank you so much for joining. Bhumika and Nari signing off.